अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बैक टू माहीज क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ सिंपल इक्वेशंस लेकर आई हूँ. ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इक्वेशंस इन माय लास्ट वीडियो. अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगी. यू कैन प्लीज़ रिफर टू इट, बट सी दैट बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज आप इंट्रोडक्शन ज़रूर सॉल्व करना. यू फर्स्ट सॉल्व द इंट्रोडक्शन, सी दैट वीडियो एंड देन यू बिगिन विद दिस एक्सरसाइज. ओके, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 4.1. ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 ऑफ सिंपल इक्वेशंस में फर्स्ट ए टेबल दिया हुआ है विच इज हैविंग 4 कॉलम्स, serial number, equation, value and say whether the equation is satisfied, yes or no. तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है जो हम x के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी x की जगह हम x का वैल्यू डालेंगे और फिर देखेंगे कि इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ओके, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं, यानी विल सी वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन जो उन्होंने दिया है x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3. सो मैं x की जगह x का वैल्यू लिखती हूँ. सो 3 + 3 इज इक्वल टू 0. 3 + 3 कितना होता है? 6. 6 इज इक्वल टू 0. इज 6 इक्वल टू 0? नो, इट्स नॉट इक्वल. So I will say it's not equal. So is the equation satisfied over here? I will say no. Correct? The equation is not satisfied. Okay, second one. X + 3 is equal to 0 and value of x is given as 0. So 0 + 3 और ये 0 मैं राइट हैंड साइड का लिख रही हूँ. 0 + 3 is 3. So is 3 equal to 0? No. So here also the equation is not satisfied. Let me take the third example. x का वैल्यू दिया हुआ है -3. So in place of x I will write -3. Okay, -3 + 3 is equal to 0. Okay, minus into plus क्या हो जाता है? Which sign? Minus into plus is minus. So 3 - 3 is 0. So 0 is equal to 0. So is the equation satisfied over here? Yes, equation is satisfied. और कुछ examples है यहाँ पे. x - 7 is equal to 1. Value of x is 7. 7 - 7 is equal to 1. 7 - 7 is 0. Is 0 equal to 1? No. So even this equation is not satisfied. Now 5x is equal to 25. 5 और x के बीच में there is no sign, which means the sign is multiplication. Now I will substitute x with its value जो यहाँ पर दिया हुआ है. So 5 multiplied by x का वैल्यू कितना है? 5. और ये 25 मैं राइट हैंड साइड का लिख रही हूँ. 5 × 5 = 25. So yes, 25 is equal to 25. So yes, the equation is satisfied over here. Right? Easy ना? So m/3 is equal to 2 और m का वैल्यू है -6. तो -6/2 और 3 -6/3 और ये 2 मैं राइट हैंड साइड का लिख रही हूँ. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. So -2. Is -2 equal to 2? No. So the equation is not satisfied. 5x is equal to 25, जहाँ पे x का वैल्यू 0 है और ये 25. Any number multiplied with 0 is 0. So is 0 equal to 25? No. So the equation is not satisfied over here. Right? m/3 is equal to 2. m is equal to 6. So 6/3 is equal to 2. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. 2 is equal to 2. Right? समझ रहे हैं ना आप? It's very simple. We are just substituting the value with the given value. Okay? We are substituting the variable with the given value. 2 is equal to 2. So yes, the equation is satisfied over here. I hope you all have understood this. It's very easy. Just go through. और 2-3 sums है टेबल में, आप उसको होमवर्क की तरह कर लो या फिर you just copy the table and solve it again. Okay. Now let's come to the second question. Okay, second question क्या है? Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation. ठीक है, so यहाँ पर equation दिया है और यहाँ पे value दिया हुआ है. Okay, so I will solve it as left hand side and right hand side. Left hand side और right hand side. Okay, left hand side is n + 5. n + 5 and right hand side it is given as 19. और n का वैल्यू कितना दिया है? 1. So I will substitute n with 1. n की जगह मैं n का वैल्यू यानी 1 जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो डालूंगी. 1 + 5. Okay, 1 + 5 is how much? 6.
एंड यहाँ पे कितना है 19. इज 6 इक्वल टू 19? नो. सो द क्वेश्चन इज whether n is equal to 1 is the solution of the equation. So I will say no. Therefore n is equal to 1 is not the solution of the equation. Understood? Is not the solution of the equation. Correct? Yes. Second one, 7n plus 5 is equal to 19, n is equal to minus 2. तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी. सो 7n plus 5, 7n plus 5, n का वैल्यू कितना है -2. सो मल्टीप्लाइड बाय -2. 7 और n के बीच में साइन नहीं है तो आई पुट मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके, प्लस 5. 7 2 ज़ा 14, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -2 इज -14 प्लस 5. और यहाँ पे राइट हैंड साइड पर कितना है 19. सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. 14 minus 5 is 9, and always don't forget to put the sign of the greater number. Is minus 9 equal to 19? No, it's not equal to. Okay, so therefore I will say that n is equal to -2 is not the solution of the equation. Okay, is not the solution of the equation. Correct? Yes. And third one, 7n plus 5 is equal to 19. n is equal to positive 2. यहाँ पे negative 2 था, now it is given as positive 2. So 7 multiplied by n की जगह मैं डालूंगी 2 plus 5. 7 2 ज़ा 14 plus 5. 14 plus 5 is 19. राइट हैंड साइड पर कितना था 19, 19, 19. So 19 is equal to 19. Correct? Both the side we are getting the same number 19, and here also it is given as 19. So therefore I will say that n is equal to 2 is the solution of the equation. Okay? Is the solution of the equation. Okay. Now 4p minus 3 is equal to 13. P is equal to -4. So I will put the value of p as -4. 4 into -4 and -3. 4 4s are 16. Plus into minus is minus and -3. See how we have to use this sign. Negative into negative, positive. Put it in, keep it in your mind. Negative into negative is positive. So 16 plus 3 is 19. But we always put the sign of the greater number. हमेशा बड़े नंबर की साइन हम आंसर को डालेंगे. यहाँ पर तो दोनों नंबर्स की साइन नेगेटिव ही है, तो ऑब्वियसली आंसर में साइन नेगेटिव आएगी. एंड राइट हैंड साइड में कितना है 13. सो इज -19 इक्वल टू 13? नो. सो देयरफॉर आई विल से दैट p is equal to -4 is not the solution of the equation. Correct? Now last sum. 4p minus 3 is equal to 13. P is equal to 0. Okay? The value of p is given as 0. So 4 multiplied by p की जगह डालूंगी 0 minus 3. Any number multiplied by 0, what is the answer? Can you please tell me? Okay, though I cannot hear you, फिर भी मैंने पूछा आपसे. 4 into 0. Any number multiplied by 0 is 0. 0 minus 3. Okay? So 3 minus 0 is 3, and put the sign of the greater number. 3 is bigger than 0. और 3 की sign है negative. So I'll put -3. Is -3 equal to 13? No, it's not equal to. So therefore I will say that p is equal to 0 is not the solution of the equation. Is not the solution of the equation. देखो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ अगर हम ध्यान से करेंगे और स्टार्टिंग से करेंगे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके करेंगे, सो एवरीथिंग इज बिकम्स वेरी इजी. मैथ्स अदरवाइज ऑल्सो इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट मैथ्स के लिए एक प्रोवर्ब बहुत अच्छा जाता है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. यू कैन सी माई वीडियो 2 times 3 times as many times as you wish. Okay, but see that you practice the sums. The sums seem very easy, लेकिन बिना प्रैक्टिस के इजी से इजी चीज़ भी फिर मुश्किल हो जाती है. इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू डोंट सॉल्व यू टेंड टू फॉरगेट द सॉल्यूशंस. सो प्लीज सॉल्व इट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब you all will choose any number. p का कोई वैल्यू लेंगे आप, and you will just check whether we are getting 17. Okay, now see, this is my left hand side and this is my right hand side.
Let me take p's value as 2. Okay, let me take p is equal to 2. I am just doing a trial and error method. p का वैल्यू मैं 2 लेती हूँ and then I will substitute 5p plus 2. So 5 multiplied by p. p का वैल्यू कितना है 2 plus 2. 5 2s are 10 plus 2 is 12. Is 12 equal to 17? No. Correct? So therefore p is equal to 12 is not the solution of the equation. Now I will take p is equal to 3 and c. Okay, I will take p is equal to 3. Okay, p is equal to 3. Equation क्या है 5p plus 2. So 5 multiplied by p की जगह मैंने वैल्यू कितना डाला p का 3. Okay, plus 2. 5 3 is 15 plus 2. Okay, is equal to 17. और right hand side पर क्या है 17. So 17 is equal to 70. Okay, so what I will say, therefore p is equal to 3 is the solution of the equation. Correct? This is called as trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हम बस कोई भी नंबर लेंगे, विल जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ पी, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, एंड वी विल सॉल्व टिल वी गेट द करेक्ट आंसर. सो यू आर वेरी लकी, इन द सेकेंड स्टेप इटसेल्फ वी गॉट द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ 3m minus 14 इज इक्वल टू 4. ओके, तो मैं क्या करती हूँ, m का वैल्यू लेती हूँ. आई विल स्टार्ट विथ सम बिगर नंबर. ओके, आई विल टेक एज 5. करेक्ट, m इज इक्वल टू 5 and I will solve my left hand side. Left hand side is what? 3m minus 14. So 3 multiplied by 5. Okay, m का वैल्यू मैंने 5 ले लिया, minus 14. 3 5s are 15. 15 minus 14 is 1. And right hand side पे कितना था? Right hand side पे दिया हुआ था 4. So is 1 equal to 4? No, it's not equal to 4. That means m is equal to 5 is not the solution of the equation. So after 5 comes 6. I will take m is equal to 6 and c. Okay, 3m minus 14 is equal to 4. This is my left hand side, this is my right hand side. Fine students. Okay, 3 into m का वैल्यू है 6 minus 14. 3 6 are 18. 18 minus 14. 18 minus 14 is 4. And right hand side पर भी कितना दिया है 4. Therefore I will say that m is equal to 6. यानी this is the solution of the equation. Because my left hand side tallies with the right hand side. Left hand side और right hand side यहाँ पर same आ रही है. So m is equal to 6 is the solution of the equation. I hope you all have understood this. It's very simple. Okay, now we shall start with the fourth question. Write equations for the following statements. Some statements are given and we have to write it in the equation form. मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको कि स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं. एंड आई एम सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज नाउ. ओके, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. सम का मतलब कौन सी साइन होती है बच्चों? प्लस. मतलब जो दो नंबर्स को प्लस करके जो आंसर मिलता है, that is called as sum. Means when we add 2 or 3 numbers, whatever answer we get, we call it sum. The sum of numbers x and 4 is 9. यानी x plus 4 is equal to 9. बस इतना ही solution है. We are supposed to write its equation. 2 subtracted from y is 8. Subtracted means which sign? Negative sign. 2 subtracted from y. तो y पहले आएगा. y minus 2 is equal to is 8. So is equal to 8. Understood? 10 times a is 70. Times मतलब कौन सी साइन? मल्टीप्लीकेशन. 10 times a means 10 multiplied by a. Okay? 10 times a means 10 multiplied by a. So 10 multiplied by a is equal to 70. So 10 into a is 10a. 10a is equal to 70. We have to just write it in the equation form. We are not supposed to solve it. We are not supposed to find the value of x, y or a over here. We are just supposed to write it in the form of equations. Now the number b divided by 5 gives 6. The number b. So number b means b divided by. Divided by मतलब ऐसे साइन डालते हैं आप. Upon 5 gives 6 means is equal to 6. Next one. 3/4 of t is 15. 3/4 of t how we will write? 3 upon 4 of मतलब multiplication. 3/4 of t is equal to 15. So how I will write it? 3 into t is 3t upon 4 is equal to 15. Understood? Now next one. 7 times m plus 7 gets you 77. 7 times m. 7 times m means 7 multiplied by m. So 7 multiplied by m. Okay. Plus 7. So I will add 7. Gets you 77.
Understood? So 7 multiplied by m is 7m plus 7 is equal to 77. Okay? 1/4 of a number x minus 4 gives 4. 1/4 of a number x means 1 upon 4. 1 upon 4. Can you see this? 1/4 means 1 upon 4 of a number x. So multiplied by x minus 4. So subtract this with 4 gives 4. So is equal to 4. So x into 1 is x. X upon 4 minus 4 gives 4. Understood? ये समझ में आ रहा है ना? Okay? Now next one. If you take away 6 from 6 times y. If you take away means minus. Take away means minus. If you take away 6 from 6 times y. 6 times y मतलब 6y. You can write 6 multiplied by y or directly 6 multiplied by y is 6y. So I wrote 6y. So if you take away 6 from 6 times y. So उसमें से मैं 6 निकालूंगी. Minus 6. We get 60. So is equal to 60. Okay. Now if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. If you add 3 to 1/3 of z. So 1/3 of z. 1/3 of z. And you add 3. So plus 3 gives you 30. So z into 1 is z. Z upon 3 means 1/3 of z. If you add 3 to it, you get 30. Did you understand this? Very simple na? Okay, but don't forget to practice. Practice makes a man perfect. Okay? Okay, now let us come to the next question. Write following equations in statement form. यानी equation दिया हुआ है and we are writing it in the statement form. Okay? P plus 4 is equal to 15. This is what we can see. So I will write the sum of P and 4 is 15. आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो. 4 added to P gives you 15. ऐसे भी लिख सकते हो. Okay? I wrote the sum of P and 4 is 15. Okay? M minus 7 is 3. Okay? 7 subtracted minus किया हुआ है ना? So subtract 7 subtracted from m gives 3. Okay, what I wrote? 7 subtracted from m gives 3. Okay, now 2m is equal to 7. 2m matlab we have seen this. 2 times m. Okay, so I will say 2 times m is equal to 7. Is equal to 7 or gives 7 or is 7. Anything you can write. 2 times m is equal to 7. Now see, m divided by 5 is equal to 3. So I will say m divided by 5 gives 3. Okay, next one. 3m upon 5 is equal to 6. So I will say 3/5 of m is 6. 3/5. We can see no 3 upon 5. So I will say 3/5 of m. Correct? क्योंकि यहाँ पे m है. So 3/5 of m gives 6. Right? Now see. 3p plus 4 is equal to 25. यानी 4 added to 3 times p. 4 is added to 3 times p. You can say 3 times p plus 4 gives 25 also you can write. But I will write 4 added. 4 is added to what? To 3 times p. So to 3 times p. Okay, gives how much beta? बच्चों gives 25. Okay students? Okay. Now see. 2 subtracted. 2 is subtracted from 4p. No? 4p minus 2 means 2 is subtracted from 4 times p. So I will say 2 subtracted from 4 times p is 18. Okay. Understood? Now see, p upon 2 means what? Half of p. See, अगर हम p निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. So 1 upon 2 means half. So 2 added to half of p gives 8. Can you understand this? 2 is added to what? P upon 2. P upon 2 मतलब half. Okay? See, how we write half? Half is written like this. Okay? So if I do half multiplied by p, p ones are p upon 2 it will become. Understood? ये p upon 2 कैसा है? अगर मैं half multiplied by p करूँगी. So p into 1 is p upon 2. So it means that p upon 2 means half of p. Okay?
So I will say 2 added to half of p gives how much? 8. Okay. So now here what we did? Equations were given and we wrote it in simple statement forms. Okay. Now sixth question. Okay. Set up an equation in the following cases. ये भी मैंने introduction part में सिखाया हुआ है and I will teach you all again. Now this is the sum. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times Permit has. क्या बोल रहे हैं? Irfan says that he has 7 marbles more. कितने marbles more? 7 marbles more than 5 times Permit has. And Irfan has how many marbles? 37 marbles. And bracket में दिया हुआ है take m to be the number of Permit's marble. Okay. So Permit के पास कितने marbles हैं? Permit has marbles. How many marbles he has? The number of marbles Permit has is m. And what Irfan says? Irfan says that he has 7 marbles more. 7 marbles more than 5 times the marble with Permit. So Permit के पास m है. So 5 times m means 5 times m is written how beta? बच्चों 5 into m. That means 5m. So now I will frame the equation. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times Permit has. So 5m plus 7 marbles more, na? 7 marbles more. So plus 7. Okay. So Irfan has how many marbles? He has 7 marbles more than 5 times the marbles with Permit. And Irfan has how many marbles? 37. So is equal to 37. Understood? So we are just supposed to set up an equation over here. Okay? I hope you all have understood. Again, I will just go through this. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times Permit has. Irfan has 37 marbles. And take m to be the number of Permit's marbles. So Permit has how many marbles? M. And 5 times m means 5m. Now Irfan has 7 marbles more. More matlab plus. Correct? So 5m plus 7 is equal to how many marbles he has? 37 is equal to 37. Okay, now the second question. Lakshmi's father is 49 years old. Okay, Lakshmi के father की age कितनी है? 49. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age, and in the bracket it is given Lakshmi's age is y years. Okay, solution. Lakshmi's age is y years. So Lakshmi's age I will write over here. Lakshmi's age is equal to y years, right? And Lakshmi's father, the condition that is given, he is 4 years older. Older यानी बड़े हैं. वो 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Understood ना? Now see, older का मतलब plus मैं समझाती हूँ. You may have a younger brother or a sister. Okay? Say suppose your younger brother is 2 years younger to you. So how you will say, I am 2 years older than my brother. I am 2 years older than my younger brother. 2 years older than मतलब मैं 2 साल से बड़ा हूँ. Understood? Okay. So Lakshmi's father is 49 years old. This is given. And he is 4 years older. 4 years older मतलब मुझे plus 4 करना पड़ेगा. Then 3 times Lakshmi's age. 3 times मतलब क्या है? 3 times Lakshmi's age मतलब 3 into y, that is 3y. So how I will calculate Lakshmi's father's age? So it is Lakshmi's father is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 3 times मतलब 3y. 4 years older मतलब plus 4 and is equal to how much? Lakshmi's father is 49 years old. So he is 49 years old. So my equation goes 3y plus 4 is equal to 49. Correct? The third question says, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. And the highest score is how much? 87, and lowest score is L. They told us to take the lowest score as L. So solution. So let the lowest score be L. Let the lowest score be L. Correct? Okay. And highest marks are how much? Highest marks obtained by a student in a class is twice the lowest marks. Twice the lowest marks. Twice means double. 2 times. Twice means 2 times. So it will become 2 multiplied by L, that is 2. That is 2L. 2 multiplied by L is 2L. Now she says that
the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. So 12 plus 7 is how much? The highest score is how much? 87. So the equation is 12 plus 7 is equal to 87. The fourth sum is, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Okay? In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. So let the base angle be B in degrees and remember that the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. Okay, मैं इसको पहले आपको समझाती हूँ. Okay? Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. Say this is isosceles triangle X, Y and Z. Okay? टू साइड्स आर इक्वल. और बेस एंगल्स किसको कहते हैं? इसको, ये जो नीचे जो एंगल्स है ना, दे आर द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स. यू नो, ये नीचे के एंगल्स दे आर कॉल्ड एज द बेस एंगल्स. ओके, एंड दिस इज द वर्टेक्स एंगल, द नेक्स्ट एंगल. ओके, सो दे आर सेइंग दैट in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle and let the base angle be B in degrees. यानी A angle B हो गया, A B angle B हो गया. You all understanding this? Okay, see, this angle is also B, this angle is also B and this angle is also B. Okay, and the vertex angle is twice either base angle, मतलब 2 multiplied by B. 2 multiplied by B means 2B. ओके, नाउ यहाँ पर ईज तो दिया नहीं है, बट व्हाट वी शुड नो इज, किसी भी ट्रायंगल में व्हेन वी ऐड ऑल द 3 एंगल्स द टोटल इज ऑलवेज 180. समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल में जब हम तीनों एंगल्स को मेजर ऐड करेंगे द आंसर इज ऑलवेज 180 डिग्री. ओके, सो नाउ मैं एज पर दिस सम हाउ आई विल डू दिस. 2 into B is 2B प्लस दिस B प्लस दिस B, मतलब ये दोनों बेस एंगल्स मैंने B ऐड किए और ये वर्टेक्स. सो 2B प्लस दिस B एंड B इज इक्वल टू हाउ मच? तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री. सो वी हैव टू जस्ट ऐड. व्हेन देयर इज नो नंबर मींस इट इज 1 and 1. 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So 4B is equal to 180 degree. I hope you all have understood this. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. टू साइड्स आर इक्वल तो दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के नीचे के जो दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. ओके, तो द सम सेज कि वर्टेक्स एंगल्स का मेजर बेस एंगल का डबल है. सो 2 multiplied by B. So 2B plus B is equal to 180 degree. So here I come to an end of exercise 4.1 of simple equations. स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो दिस, प्रैक्टिस दिस. अंडरस्टूड नो? अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो मिस किया हुआ है तो प्लीज मैं इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे रही हूँ. यू ऑल प्लीज फॉलो दैट लिंक एंड सी माई इंट्रोडक्शन वीडियो ऑल्सो. ओके, एंड प्लीज शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, एंड give me your precious comments. If you want anything else, if you have any difficulty, you please tell me. Instagram का link भी मैं नीचे दे रही हूँ. You can even message me on Instagram. And thank you for watching my video. Bye. You know, I think I'll tell you the story.